टू द ऑडिट मैराथन। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 1, 2, 6 एंड 11। सो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया अभी तक तो प्रेस कर लेना। सो लेट्स मास्टर ऑडिट टुगेदर। शुरू करते हैं फ्रॉम चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ताकि जो ऑडिट है ना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट हो सके। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है? तो प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है ऑडिटर को टू devote appropriate attention to important areas. Planning also helps to identify and resolve potential problems ऑन टाइमली बेसिस। हेल्प करता है ऑडिटर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने में ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। हेल्प करता है ऑडिटर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने में ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। Also assist करता है in selection of engagement team members with appropriate level of capabilities and competence to respond to anticipated risk and the proper assignment of work to them. Also facilitate करता है direction and supervision. It also facilitates direction supervision of engagement team members in the review of the work. Assist करता है easy coordination of work done by others such as experts. So now moving on to प्लानिंग जो है ना वो एक कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस है, वो कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑफ ऑडिट। एंड ऑल्सो प्लानिंग है ना कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट से बिगिन होता है और कंटिन्यू होता है टिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट। और उसमें कौन से मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑब्टेन करना जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्k, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, involvement of experts and other procedures as risk assessment procedures. So analytical procedures to be applied as risk assessment procedures, obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework, determination of materiality, involvement of experts and performance of other risk assessment procedures. So now we are moving on to कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ना वो ऑडिट प्रोसीजर है जो परफॉर्म होता है टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड। और पहले तो एंटिटी और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, फिर इंटरनल कंट्रोल जो है कि हेल्प करता है आइडेंटिफाई एंड असेस करने में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द असर्शन लेवल्स। ठीक है, प्लान अब इसमें वही सेम दे रखा है जो पहले पेज में दे रखा था। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग ऑडिट। अब एंगेजमेंट पार्टनर अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट team shall be involved in planning the audit, including planning and participating in the discussion among engagement team members, the involvement of the engagement partner and other key members of the engagement team in planning the audit draws on their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness of efficiency of the planning process. Now we are moving on to अब प्लानिंग प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं? दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है, प्लानिंग एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में ना तीन चीजें इंक्लूडिंग होती है। एक तो ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करना जो रिगार्डिंग द कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप है, फिर इवेल्युएट करना कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और फिर एस्टैब्लिश करना एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो पहला तो परफॉर्म प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, फिर इवेल्युएट करना कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, फिर एस्टैब्लिश करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो अब वो जो परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप है उसमें ना हमको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है regarding the before accepting to obtain information before accepting the engagement with new client और कंटिन्यूइंग द एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ऑडिट। तो यहाँ दे रखा है द फर्म शुड ऑब्टेन
information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, whether and when considering acceptance of a new engagement with an existing client, and also matters such as integrity of principal owners and key management competence of engagement team to perform the audit engagement, and implications of matters that have arisen during current and previous audits engagement may need to be considered. ठीक है, अब हमको इवेल्युएट करना है कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. अब इसमें इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन दे रखी है. इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम. अब एंगेजमेंट पार्टनर को है ना थ्रू आउट द ऑडिट जो है अलर्ट रहना है, ऑब्जर्वेशन करना है एंड इंक्वायरीज करनी है for evidence of non-compliance with relevant ethical requirements by members of the engagement team. And also हमको ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है. एक तो पहले तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड देन आइडेंटिफाई इवेल्युएट करना है ऐसे सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप्स जो क्रिएट करते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. तो पहला तो ऑब्टेन करो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, एंड देन इवेल्युएट करना इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफाइड ब्रीचेस if any of the firm's independent policies and procedures to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement. तो evaluate करो ऐसी information और identified breaches of the firm's independence policies and procedures to determine करती है whether they create a threat to independence for the audit engagement and as a appropriate action law to eliminate such threats or reduce them to an appropriately low level. तो पहले तो हमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है अप्लाइंग सेफगार्ड करके कि थ्रेट को रिड्यूस करो टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल और एक्सेप्टेबल. ठीक है, या फिर विड्रॉ कर दो फ्रॉम द एंगेजमेंट अगर परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन है. तो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन. द एंगेजमेंट पार्टनर शेल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द फर्म एन एबिलिटी to resolve the matter for appropriate action. तो besides consideration for kind, ठीक है, ये हमको अब establishing एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में क्या है, जो ऑडिटर है ना वो एंगेजमेंट लेटर भेजेगा क्लाइंट को ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. मतलब ऑडिट के शुरू होने से पहले ही जो ऑडिटर है वो एंगेजमेंट लेटर भेजेगा और ये दोनों के इंटरेस्ट में होता है एंटिटी और ऑडिटर के. ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में इंक्लूडिंग थे 3 टाइप्स के. नाउ प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या करना है, एस्टैब्लिश करनी है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और डेवलप करना है ऑडिट प्लान. तो एस्टैब्लिश करनी है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलप करना है ऑडिट प्लान. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होता है, सेट करती है स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट of the more detailed audit plan, sets the scope, timing and direction of the audit and guides the development of a more detailed audit plan. Now we are moving on to कि कौन से matters जो है ना वो included होते हैं audit की strategy में. तो resources to deploy for specific audit areas such as the use of appropriate experienced team members for high risk areas or the involvement of experts on complex matters, या फिर the amount of resources to allocate to specific audit areas such as the number of team members assigned to observe the inventory count and material locations, the extent of review of other auditor works in the case of group audits, or the audit budget in hours to allocate to high, या फिर when the resources are to be deployed such as whether an interim audit stage or at key cutoff dates. अब कैसे जो है resources जो है manage, direct और supervise होगी such as when team debriefing and briefing meetings are expected to be held, how engagement partner and manager reviews are expected to take place, for example on site or off site, and whether to complete engagement quality control reviews. Factors to be taken into consideration by auditor for establishing audit strategy. अब 5 तरह के फैक्टर्स जो है वो ऑडिटर को कंसिडरेशन में लेने. पहला तो आइडेंटिफाई करो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन करते हैं स्कोप ऑफ डिफाइन करते हैं उसका स्कोप. अब वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, applicable financial reporting framework applicable to the entity, nature of business segments audited including the need for specialized service,
include industry specific requirements required by industry regulators, expected use of audit evidence obtained in previous audits. Now, the second point is हमको ascertain करना है reporting objectives of the engagement to प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड. अब कौन से इंस्टेंसेस है जो उसमें आएंगे? पहला तो एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सॉरी, एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, entities timetable for reporting, and then organization of meetings to discuss the nature, timing, and extent of audit work, and discuss with management regarding the expected type and timing of reports to be issued, including the auditor's report. तो पहला टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट से हमको ना दो तरह की चीज़ें डिस्कस करनी है. पहला तो द एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट. दूसरा रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट, and expected nature of timing of communications among engagement team members, including the nature and timing of team meetings and timing of the review of the work. तो पांच चीजें हैं: एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट. डिस्कस करो मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड including the auditor's report, and then discuss with management regarding the expected communication on the status of audit work throughout the engagement, expected nature and timing of communications among engagement team members, including the nature and timing of team meetings and timing of the review of work performed. If we consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team efforts, ऐसे factors को हम consider करेंगे जो auditor की professional judgment में significant है in directing the engagement team efforts. Now, the auditor needs to direct efforts. The auditor needs to direct efforts of engagement team towards matters that in his professional judgment are significant. Primarily identification of material classes of transaction, account balance and disclosure help auditor in establishing overall audit strategy. अब कौन से एग्जाम्पल्स है? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस जो डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल. अब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल. Volume of transaction which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control. तो volume of transactions जो डिटरमाइन करेंगे कि whether it is more efficient for the auditor to rely on in internal control. The volume of transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control. Next is significant industry developments such as changes. तो significant तीन चीज़ें हैं. पहला तो significant industry development या फिर other significant relevant developments such as the changes in the legal environment affecting the entity, या फिर significant industry development that such as changes in industry regulations and reporting requirements, या फिर significant changes in financial reporting framework such as changes in accounting standards. या तो changing in financial reporting framework such as changes in accounting standard, या फिर significant industry development such as changes in industry regulations and reporting requirements, या फिर other significant relevant developments such as the changes in the legal environment affecting the entity. Now, moving on to consider the results of primary engagement activities and consider, where applicable, whether knowledge gained on other engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant. तो consider करो result of primary engagement activity and knowledge gained from similar engagements goes on a long way in establishing the result of previous audit and the manner in which auditor emphasized to engagement team the members to need to questioning mind. ठीक है, a certain nature timing of resources to perform the engagement. अब रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान. ऑडिट स्ट्रेटजी जो है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन करती है, और ऑडिट प्लान जो है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट बताता है, एंड ऑडिट प्लान जो है मोर डिटेल्ड होता है एज कम्पेयर टू ऑडिट स्ट्रेटजी. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी
चेंजेस एंड अब नाउ डॉक्यूमेंटेशन. अब चेंजेस पहले तो हम प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स करते हैं. तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी एंड एरिया ऑफ ऑडिट, assessed risk of material misstatement and capabilities and competence of the individual team members performing. डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है स्ट्रैटेजी को, प्लान को और सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और द ऑडिट प्लान. नाउ ऑडिट प्रोग्राम. Audit program can a series of verification procedures to be applied to the financial statements and accounts of a given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on the financial statements.